हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी ईगल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं विच इज़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये एक्ट थोड़ा लंबा है, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट इन पार्ट्स। तो आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज बेसिक्स को टच करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। आई एम गोइंग टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो अगर आपको कुछ जगहों पे रिपीटेटिव लगे या बहुत ओवर सिंप्लीफाइड लगे और यू थिंक दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, all I can suggest is please go through it once. It will act as a very good tool to brush up your basics and recall your basics. तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एक्ट को समझने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो एक्ट लाया क्यों गया है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं कि what was the need for bringing that act into picture, you will understand the reason behind each of its provision, behind each of its section, कि उसके पीछे का underlying cause क्या है, what is the ultimate goal which every provision of that act is trying to fulfill. तो हमें ये negotiable instrument की ज़रूरत क्या है, पहले ये समझते हैं। We need a negotiable instrument for the ease of doing any transaction. हम कोई भी transaction करते हैं उसमें money involved होती है. Now it is not easy for us to carry huge amount of cash everywhere. Neither is it safe nor is it convenient. Suppose आपने कोई transaction किया and suppose it involves an amount of rupees 2 lakhs. Now you are not going to move around having rupees 2 lakhs as cash in your hand. Firstly, it's not safe, you can lose your money anywhere, and secondly, it's not convenient either for you to carry nor for the receiver of the money to carry it in cash form. So what is one option you have? You can exercise the option of using the negotiable instrument. Secondly, ये किन के लिए important ज़्यादा है? See, in the business of in trade and commerce, we see that every day there are different kinds of transactions happening, right from transactions of negligible amount to huge amounts. So in that situation also negotiable instruments play a key role in all kinds of business transactions. Now when we say negotiable instrument, we must know what actually we are talking about. तो ये यहाँ पर जो negotiable है ये है क्या? When we say that something is negotiable, what we actually mean is that it is transferable. इसका मतलब ये जो instrument है, instrument means the document. So this money payable, you have converted it into document. आपने इस बात को सिद्ध करने के लिए कि certain amount of money has to be paid for this transaction, you have written it down in the form of a document. और वो document बिल्कुल money की तरह ही एक हाथ से दूसरे हाथ तक easily transfer किया जा सकता है. Now if it would have been money, there would have been a fear of losing it or maybe somebody stealing it. But now that it is a document, that fear is reduced. Secondly, ये document सिर्फ वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका इस पर नाम है, जो कि हम आगे देखेंगे how it is done. So negotiable means transferable and the instrument means the document. So using this transferable instrument for payment of money and money only. Now this is something to be understood here. आप जब कोई transaction करते हैं, you might exchange certain things. You might say to somebody, there can be a transaction like this wherein you say, I am ready to buy so much of your goods. What you do is you offer me free packaging of the goods because you also provide raw material for that. अब transaction तो है ये, पर यहाँ पे money involved नहीं है. So whenever we are using negotiable instruments, one thing we need to always keep in mind is that ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के पेमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, for no other kind of exchange, for no other kind of transaction. It is going to be certain amount of money and money only, nothing else. The moment you attach something else also along with money,
you no longer can make use of a negotiable instrument here. So if you want to use negotiable instrument, it has to be a payment of money and money only, nothing else attached to it. So why do we need the Negotiable Instruments Act? हमारे पास negotiable instrument है, let's use it. Why do we need an act on it? तो आप सब इस बात को समझते हैं कि whenever something new comes up, along with the good things, certain bad things also are there. What if this instrument is misused? What if its credibility is tarnished? जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी आई हुई है and even RBI is planning to come up with a law on that. So anytime something new comes up, we need to regulate it so as to make it more safe, more reliable, more credible. और ये तभी होगा जब उसके संदर्भ में एक कानून बनाया जाए और सभी लोग उस कानून के हिसाब से ही चलें. So to regulate the working and use of this negotiable instrument and to prevent and check any misuse or illegal activities that can sabotage the purpose and utility of the negotiable instrument, we came up with an act called the Negotiable Instruments Act. कोई बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन का मेथड है बट वो मेथड खतरे से खाली नहीं है या उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो कोई भी वैसे मेथड को इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, वैसे ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहेगा. द सेम इज़ हियर ऑल्सो. So in order to make negotiable instruments safe, to make it more credible so that people use it more and more, this Negotiable Instruments Act was enacted. It came into force on March 1st, 1882 and it's applicable to the whole of India. अब ये जो negotiable instrument है, इसके आने के पहले भी तो trade and commerce चल रहा था. Then also people were doing different types of transactions. So what were they using? और अब जब ये Negotiable Instrument Act आ गया है तो इन ट्रेडिशनल चीज़ों का, इन ट्रेडिशनल कस्टमरी इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होने वाला है, या यूँ कहे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इन कस्टमरी इंस्ट्रूमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है. तो जितने भी ट्रेडिशनल कस्टमरी इंस्ट्रूमेंट्स है या हुंडीज़ हैं, जैसा कि आप Negotiable Instrument Act के बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, Negotiable Instrument Act is applicable to all of these until and unless anything contrary is mentioned in customary law. अगर कुछ भी ऐसा आता है जो कि NI Act से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा होता है, तो ऐसे में कस्टमरी लॉ को फॉलो किया जाएगा, ना कि NI Act को. Now when we read section 13 of this act, it tells us about the types of negotiable instrument. कहीं भी इस पूरे एक्ट में exactly negotiable instrument क्या है इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. सेक्शन 13 भी हमें इसके प्रकार कितने होते हैं यह बताता है कि यह 3 प्रकार के होते हैं. First is the promissory note mentioned in section 4. Secondly, we have the bill of exchange mentioned in section 5. And thirdly, there is check which is mentioned in section 6. और इसका जो explanation है, the explanation to section 13 is telling us how will the payment occur. Suppose you have a negotiable instrument. So how will the payment occur? Actually तो cash आप दे नहीं रहे, you are providing the person with a instrument, with a document. So how are you going to pay the person and who will receive the money from this instruments? तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी. ये जो पेमेंट है ये 2 तरीके से हो सकता है. इट इज़ फर्स्टली आइदर पेएबल टू ऑर्डर. अब पेएबल टू ऑर्डर का मतलब क्या है? पेएबल टू अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन और एज डायरेक्टेड बाय दिस स्पेसिफिक पर्सन. सपोज मिस्टर ए सेज that I had once given you some amount of money and now I need my money back. So now he is ordering Mr. B that you pay me my 100 rupees back. ये एक situation हुई. Or he can say that I had to pay Mr. C some amount of money and that is also 100 rupees. So what you do? You better pay this to Mr. C on my behalf. तो ये क्या कर रहा है? Mr. A is giving an order. So this is payable to order. And he is also mentioning that it is payable to a specific person. That specific person can be himself also, or that specific person can be some XYZ person also.
पेबल टू बियरर क्या होता है? Suppose there is an instrument and today it is in hands of Mr. A, tomorrow it is in the hands of Mr. B. So at one moment the bearer of the instrument was Mr. A. At that time, whosoever had the possession of the instrument is entitled to receive the payment. So suppose Mr. A is holding the instrument, he is having the possession of the instrument. So now he is entitled to receive the payment. Moving to section 14, what we see is the term negotiation has been defined. Negotiation क्या है? As I have said earlier, negotiable means transferable. So negotiation means transfer of an instrument to a person as to constitute him as the holder. क्या कर रहे हैं? When we are negotiating, when actually negotiation is happening, what is actually happening is transfer of that instrument to a person. और जिस व्यक्ति को वो ट्रांसफर हो रहा होता है, अब वह व्यक्ति होल्डर बन जाता है. So there are two key terms here that we need to understand. Firstly, there is this term holder, which is defined in section 8 of the Act. So holder means any person who is entitled to have possession of the instrument. Also, he is entitled to receive the amount as mentioned in the instrument. So suppose Mr. A has given an instrument, negotiable instrument, to Mr. B. So now Mr. B has the possession of this instrument, and in the instrument it has been written that once we had a business transaction wherein I was supposed to pay rupees 500 to Mr. B. Through this instrument I am giving rupees 500 to Mr. B. So now Mr. B is entitled to receive this amount via this instrument, and also he has the possession of this instrument. So now Mr. B is the holder. The second key term here is transfer. Transfer means going from one hand to the other. Now mode of transfer क्या है यहाँ पे? Transfer also means the movement of ownership. So there are modes of transfer. There are mainly two modes of transfer. Number one is by mere delivery, and the second one is by endorsement and delivery. Let's see what does this mean. Mere delivery. Mere delivery makes the person a holder. आपने किसी को एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो क्या हुआ? उस व्यक्ति के हाथ में उसकी पोजेशन आ गई. दूसरा, अब वो उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो भी उसमें अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लिखी हुई है, वो उसे रिकवर कर लेगा, रिसीव कर लेगा. सो नाउ ही इज़ द होल्डर, ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट. ये संभव कब होता है? मियर डिलीवरी से कोई व्यक्ति मनी को रिसीव कर ले और मनी ट्रांसफ़र हो जाए. यह कब होगा? जब वो इंस्ट्रूमेंट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होगी, यानी वह इंस्ट्रूमेंट इस बात को दर्शाती है कि मैं जिसके भी हाथ में रहूँगी, आई एम गोइंग टू मेक दैट पर्सन एलिजिबल फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. So this instrument today it is in the hands of Mr. A, tomorrow in the hands of Mr. B, and later in the hands of Mr. C. So whenever these people one by one they had the instrument, the moment when they were having the possession of the instrument, they were eligible to receive this 500 rupees. Why? Because it is a bearer instrument. जो bearer है, that person becomes eligible to receive the money. Now there is the second mode of transfer, that is endorsement and delivery. Endorsement जो है, it is defined in section 15. It says that signing the instrument and its delivery in order to transfer the ownership of the instrument to another person. आप ownership कैसे transfer करेंगे? You are going to be very specific about the person. आप किसे ownership दे रहे हैं? यहाँ पर bearer वाली बात नहीं है. क्यों नहीं है? Because when you endorse something, you put your signature.
तो अब इंडोर्समेंट के कई तरीके होते हैं. लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन. पहला है इन ब्लैंक. सो व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से इंडोर्समेंट इन ब्लैंक? दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 16. So there is only the signature of the person who is making this endorsement. Secondly, endorsement in full. That also is given in section 16 of the act, which means signature and a direction to pay a specific person or to his order. तो अब आपने क्या कर दिया, आपने signature तो किया, साथ में you have specified a particular person that this person must receive the money, or any person as directed by him must receive the money. So this is endorsement in full. Thirdly, there is conditional endorsement. This has been given in section 52. So an endorser, अभी कंडीशनल क्यों है, यहाँ ज़रूर कुछ कंडीशन लगे, hence the term conditional endorsement. कंडीशन ये होती है कि जो endorser होता है वो खुद को एक्सक्लूड कर लेता है किसी भी तरीके की लाइबिलिटी से. दैट आई एम नो मोर लाइबल वेदर दिस इंस्ट्रूमेंट इज फेचिंग यू मनी और नॉट. आई एम नाउ नॉट लाइबल फॉर इट. और द ट्रांसफर इज कंडीशनल अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. सपोज मिस्टर ए सेज मिस्टर पे टू मिस्टर बी ₹500 when he delivers these many goods to so and so person. तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है, he is going to receive 500, that is for sure, but when? Only when he delivers so much amount of goods to a particular person. तो ये हो गई कंडीशन. So this is a conditional endorsement. Endorsement तो है, but that endorsement will fructify, it will come into execution only and only if this condition is fulfilled. फिर होती है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट. रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या है? रिस्ट्रिक्टिंग फर्दर नेगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सपोज द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मूविंग फ्रॉम मिस्टर ए टू बी टू सी टू डी, बट नाउ व्हेन मिस्टर डी endorses it, he puts a restriction so that no further negotiation of that instrument is done. And next is partial endorsement. Partial endorsement has been defined and explained in section 56 of the act. So generally there is this rule that whenever you endorse, you have to endorse for the full amount. Suppose there is an instrument and this instrument is making payment of ₹500 possible. So anytime a person endorses this instrument, they cannot say that I am going to endorse only ₹200, rest 300 is with me only. ये जनरली नहीं होता है. आप जब भी इंडोर्समेंट करते हैं आप फुल अमाउंट के लिए करते हैं, पर यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है सेक्शन 56 में, जिसे कहा जाता है पार्शियल इंडोर्समेंट. ये क्या है? इंडोर्समेंट इज वैलिड ओनली. तो पार्शियल इंडोर्समेंट हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक अपवाद है जनरल रूल का. जनरल रूल हमें क्या कह रहा है कि एंडोर्समेंट इज वैलिड ओनली इफ इट इज फॉर द फुल अमाउंट. पर यह जो सेक्शन 56 का अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, ये कह रहा है इफ द अमाउंट हैज बीन पार्टली पेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट यू कैन एंडोर्स इट पार्शियली. अगर कुछ हिस्सा पहले से पे कर दिया गया है तो बचे हुए हिस्से के लिए आप द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पेमेंट, उसके लिए आप पार्शियल एंडोर्समेंट का सहारा ले सकते हैं वाया सेक्शन 56. तो हमें पहले जानना होगा कि कॉमन फीचर्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन what a promissory note in specific is, what is bill of exchange, and then what is a check. बट हम पहले कॉमन फीचर्स देखते हैं जो कि सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में होते ही हैं. फर्स्टली इट हैज़ टू बी इन राइटिंग. सी द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, सो ऑब्वियसली इफ इट इज अ डॉक्यूमेंट it will be in writing. Secondly, it has to be signed. If an instrument is passing from one hand to the other, how will you trace its origin? अगर हम किसी ट्रांजैक्शन का ओरिजिन ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है.
So definitely a negotiable instrument has to be signed. Thirdly, it should be freely transferable. The entire concept of negotiable instruments and then having an act to regulate this is what? To make trade and commerce more smooth. The entire process should be very neat and clean and smooth. How is that possible? Only when the negotiable instrument is freely transferable. Transfer as many times. Now when we say transfer as many times, suppose there is a bill of exchange, so it can be transferred as many times. There's a check, it can be endorsed as many times, but till what time? Until its date of maturity. Once it gets matured, now it has to be encashed. So you can transfer as many times, but only and only before its date of maturity. Negotiable instrument is always made to the order or made as a promise to pay. Next is it has to be unconditional. You cannot have conditional negotiable instrument wherein a lot of conditions are given and then you are going to make the transfer. That won't be counted as a negotiable instrument. This payment of money that Mr. A is going to pay Mr. B a certain amount of money, this promise to pay should be unconditional. Or if there is an order to pay to the order of Mr. B so and so amount of money, say 500 rupees. तो ये जो ऑर्डर है ये अनकंडीशनल होना चाहिए, इस पे कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. And the most important one, the negotiable instrument deals with only and only payment of money and nothing else. Suppose there is payment of money and there is something more attached to it. Are we going to call it a negotiable instrument? And the answer is no. Only and only money should be there in the transaction, and that also a certain amount of money. There should not be any ambiguity as to the exact amount of money. बिल्कुल exact. 500 means 500. 999 means 999 only. There shouldn't be any ambiguity as to it. Now let's see all the different kinds of negotiable instruments as given under section 13 one by one. So firstly we have the promissory note, which is mentioned in section 4. Firstly we take an example to understand this. Suppose there was a business transaction between Mr. A and B. कुछ transaction हुआ था और Mr. B का कुछ पैसा Mr. A के पास रह गया था. Now what Mr. A is saying is he is making an undertaking to pay that certain sum of money to B. Suppose इन दोनों के बीच एक transaction हुआ था 20,000 rupees का, and Mr. A cannot pay it immediately. So after some days he is making an undertaking that okay, I undertake to pay you rupees 20,000. Now who is saying this and who is writing it in the document? Mr. A. So Mr. A is the maker of the promissory note. He is the one who is promising and he is the one who is making this note that yes, I am going to pay you rupees 20,000. Now once this document is made and given to Mr. B, who is going to receive the money? It is Mr. B who is going to receive the 20,000 rupees. So now Mr. B is the payee. So payee is always a person who is going to receive the money. And maker here is the person who is promising, who is making the promise. तो इस तरह से हम देखते हैं कि promissory note के essentials क्या हैं? It has to be in writing, it has to be an unconditional undertaking, which means an unconditional promise. It must be signed by the maker. So Mr. A is definitely going to sign the promissory note. It has to be paid to the order or to the bearer of the instrument. Now here is a catch. Negotiable Instrument Act हमें कहता है that the promissory note can be made to the order or it can be a bearer instrument also.
However, when you carefully read section 31 clause 2 of the RBI Act, what you will see that there is a restriction mentioned. What is the restriction? That it cannot be a bearer instrument. Why is that so? Because otherwise anybody will take it fraudulently or make a fraud on the instrument and say that I am the bearer of the instrument, now I am supposed to encash the money. So whenever we see, whenever we read section 4 promissory note, we always need to interpret it in the light of section 31 clause 2 of the RBI Act, which says that it cannot be a bearer instrument. Otherwise anybody is going to have the possession of the promissory note by doing some kind of theft or forgery, and then they are going to claim the money. Next is express promise to pay. Suppose Mr. A says, I owe Mr. B 20,000 rupees because few days back we had this business transaction. Yes, he's acknowledging the fact that he has made a transaction of rupees 20,000 with Mr. B. But nowhere is he promising, nowhere is he undertaking that I am going to pay this to Mr. B in near future. So there is no promise, and until and unless there is any promise, until and unless there is any undertaking, we cannot call it a promissory note. The amount of money must be certain, there shouldn't be any ambiguity as to it, and it should be money and money only, as I have said earlier. Next is a bill of exchange. Now see what happens in bill of exchange. Let's assume Mr. A and B, they have some kind of business. So Mr. B says that okay, I'm ready to give you the goods and you can pay me the money sometime later. So now Mr. B has this bill of the goods. This is bills receivable. Mr. B ये पैसा रिसीव करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट मिस्टर ए को दिए हैं. मिस्टर ए ने भी कह दिया ओके आई विल पे यू व्हेन आई हैव मनी. So now Mr. A has the bill of this service or the product whatever he has got from Mr. B. तो ये bills payable है, ये Mr. A को पे करनी है, आज नहीं तो कल. So Mr. A here is the debtor and Mr. B is the creditor. After some time, what Mr. B is saying that, see, you haven't paid my money till now, what are you going to do? So now what Mr. B does is, he makes a bill of exchange. Bill of exchange होता क्या है? Bill of exchange एक order होता है. So now Mr. B will order Mr. A that, see Mr. A, till now you haven't made any payment to me. Now you do this payment. I'm ordering you. You make this payment to me because now it is necessary. I need to receive my money. So Mr. B is making a bill of exchange and he is passing an order on Mr. A that Mr. A, please pay back my money which is pending on your side. तो ऐसे में Mr. B जो है, हम इन्हें क्या कहेंगे? He is the drawer. He is the one who is making the instrument, bill of exchange. He is drawing the order. और ये किस पे draw कर रहे हैं order? Mr. A पर. So now Mr. A is the drawee. अब Mr. B क्या क्या कर सकते हैं when he is making this bill of exchange, this order that you pay back my money? Firstly, he can mention in the instrument that certain amount of money, and then he will say, pay me my money. So when Mr. B says that you have to pay me my money, Mr. B is the payee, यानी वही पैसा रिसीव करने वाले हैं. Payee हमेशा वही व्यक्ति होता है who is going to receive the money. तो इस situation में Mr. B payee हो गए. So this is one situation where the drawer is also the payee. ड्रॉवर ही वो व्यक्ति हैं जो पैसा भी रिसीव करने वाले हैं. दूसरी सिचुएशन क्या होती है? मिस्टर बी और मिस्टर ए तो बिजनेसमैन है, तो मिस्टर बी को किन्हीं और को भी पैसा देना था. सपोज मिस्टर एक्स को कुछ पैसे देने थे, या इन्हें फर्दर कई जगह इनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये कई लोग कुछ पैसे वैसे देते रहते हैं. तो उन्होंने कहा पे टू द
बियरर, उन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें उन्होंने लिख दिया पे टू द बियरर। अब जब भी ये एक्सेप्ट होकर आएगा मिस्टर ए से, नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज fructified when it is accepted by the person who is supposed to pay, that is the drawee. Only when it is accepted by the drawee, the bill of exchange is actually, it actually becomes valid. तो मिस्टर ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, एंड नाउ वो डिलीवरी भी होगी बी के पास। अब बी ने उठा के वो इंस्ट्रूमेंट ही सीधा सीधा किसी को दे दिया। सो नाउ हु इज द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? मिस्टर एक्स. So now that money will be received by Mr. X, by the bearer, whosoever it is. So now bearer is the payee. फिर एक और सिचुएशन आती है, पे टू मिस्टर सी। अब यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, बट दिस थर्ड पर्सन इज नाउ डिफाइंड। अभी बहुत स्पेसिफिक व्यक्ति हो गए, मिस्टर सी को ही देना। सपोज मिस्टर बी और सी के बीच भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ था और सी का कुछ पैसा बी के पास पेंडिंग था। सो नाउ मिस्टर बी इज सेइंग, wait, I'll give you your money, let me take back my money from Mr. A. तो वो he makes a bill of exchange, he draws an order on Mr. A और उन्हें डायरेक्टली बोलते हैं कि सुनो, मुझे मत देना, मुझे भी किसी को पैसे देने थे, तुम डायरेक्टली उसे ही पे कर दो। और वो व्यक्ति कौन है? वो है मिस्टर सी। सो नाउ मिस्टर सी इज द पेई। तो इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं? ट्रांजैक्शन तो ए और बी के बीच हुआ, बट द पेई कैन बी अ थर्ड पर्सन ऑल्सो। अब क्या होता है, मिस्टर बी ने फिर से एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ही इज ऑर्डरिंग मिस्टर ए दैट यू पे दिस टू द बैंक, यू गिव दिस इंस्ट्रूमेंट, यू एक्सेप्ट इट एंड यू गिव इट टू द बैंक। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन बैंक इज द पे। अब आप सोच रहे होंगे, मिस्टर ए और बी के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, पहले सिचुएशन में बी ने कहा पे मी द मनी, वेल एंड गुड, मिस्टर बी को ही रिसीव करना था। दूसरे सिचुएशन में उन्होंने कहा बियरर को दे दो, हो सकता है मिस्टर बी के किन्हीं और लोगों के साथ ट्रांजैक्शन रहे हो तो बियरर को भी दे सकते हैं, वेल एंड गुड। बट व्हाई विल मिस्टर सी बी ए पे? तो कई बार जैसा कि मैंने आपको समझाया, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेड एंड कमर्स प्रैक्टिसेस, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, तो मिस्टर बी को भी किसी को पैसा देना था। सो a bill of exchange, in a bill of exchange even a third person can be a payee, so keep that in mind. But why will bank be a payee? ये सोचा आपने? This question must have struck you that why bank will be a payee. ए को मिस्टर बी ने खुद रिसीव किया, ठीक है, बियरर को रिसीव करवा दिए पैसे, वो भी ठीक है, मिस्टर सी स्पेसिफिक पर्सन को करा दिए, चलो कोई ट्रांजैक्शन रहा होगा, ये बैंक बीच में क्यों आ रहा है पैसे लेने? सो लेट्स सी व्हाई द बैंक इज कमिंग। अगर मिस्टर बी ने डिस्काउंट करा रखा है अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को, इन दैट सिचुएशन द बैंक विल बी अ पे। नाउ व्हाट इज दिस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? सी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग का तरीका है। सपोज मिस्टर ए और बी के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ, मिस्टर बी को तुरंत पैसे चाहिए थे, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में आप तभी पैसे ले पाते हैं व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज मैच्योर्ड। बट मिस्टर बी को तो पैसे चाहिए थे और मैच्योरिटी के पहले उन्हें ज़रूरत थी, ही हैड सम अर्जेंट वर्क। नाउ व्हाट? सो नाउ व्हाट मिस्टर बी डिड वाज, उनके पास जो कॉपी थी एक्सेप्टेंस की, बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस की, जो मिस्टर ए ने उन्हें डिलीवर कर दिया था, वो लेकर के वो बैंक के पास जाते हैं एंड व्हाट ही सेज इज, सी आई एम इन नीड ऑफ मनी एंड आई हैव दिस बिल रिसीवेबल, बट ये मैं रिसीव कर पाऊंगा कुछ दिनों बाद, सपोज द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज आफ्टर 6 months। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद ही रिसीव कर पाऊंगा, बट आई एम इन डायर नीड ऑफ कैश एट द मोमेंट, प्लीज हेल्प मी। तो बैंक क्या कहता है कि ओके, आई एम रेडी टू परचेज योर बिल ऑफ एक्सचेंज and give you cash, but I'm not going to pay you so much of money. What if Mr. A denies payment, or if some natural calamity or some unforeseen event happens? So why should I pay you the exact money? Let me have some buffer for this uncertainty.
कि मिस्टर ए पे करेंगे कि या नहीं करेंगे. तो नाउ व्हाट द बैंक डज इज it purchases the bill of exchange from Mr. B before the maturity date of the bill of exchange because Mr. B needed cash. और ये मैच्योरिटी डेट के पहले क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट. सो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन सेक्शन 31 कि आप मैच्योरिटी के पहले तो ये आपका इन कैश होगा नहीं. All you can do is you go to the bank and sell it and you get your short term financing. तो बैंक इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक थोड़े कम दाम पर खरीद लेता है मिस्टर बी से. तो ये जो कम दाम पे खरीदा, there is a certain amount of discount which Mr. B is giving to the bank. तो इसीलिए इसका नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो मिस्टर बी बेसिकली अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट के पहले बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं बैंक को एट अ डिस्काउंटेड रेट, और बैंक उसे खरीद ले रहा है एट अ डिस्काउंटेड रेट और तुरंत कैश दे दे रहा है मिस्टर बी को. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो ऐसे में जब मैच्योरिटी डेट आएगी, हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी नाउ? मिस्टर बी तो पैसे लेके चले गए. हु इज नाउ गोइंग टू रिसीव द मनी फ्रॉम मिस्टर ए? इट इज द बैंक. सो बैंक इज द पेई नाउ. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि what is the situation when in a bill of exchange the bank becomes the payee. So bank is going to purchase the instrument at a lesser price, which is a discounted price, hence the name discounting bill of exchange. चलिए आगे देखते हैं. तो अगर हम एक कंपैरिजन करें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का, तो हम क्या देखते हैं? प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे. ये एक अंडरटेकिंग होती है जो कि डेटर स्वयं दे रहा होता है. दैट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी. दिस इज अ प्रॉमिस. बट बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, और यह डेटर नहीं बना रहा था, ये क्रेडिटर बना रहा होता है. ही इज ऑर्डरिंग द डेटर दैट नाउ यू प्लीज पे मी माई मनी. सो ही इज एक्चुअली ऑर्डरिंग द डेटर. तो दिस इज एन ऑर्डर टू पे मनी. प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस टू पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, एक कमांड होता है. प्रॉमिसरी नोट क्या है? उसमें दो लोग होते हैं, द मेकर हु इज मेकिंग द प्रॉमिस एंड द पे हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है? देयर इज अ ड्रॉवर who is going to draw the bill of exchange on the drawee, और एक तीसरा किरदार होता है that is the payee. अब कुछ situations में drawer can be the payee, कुछ situations में the bearer can be the payee, a specific third person can be a payee, or if it is a discounted bill of exchange, what we see, the bank can be the payee. प्रॉमिसरी नोट में एज सच किसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ दो ही लोग होते हैं, और जो डेटर है वो तो खुद ही प्रॉमिस कर रहा होता है दैट आई एम गोइंग टू पे यू दिस मनी, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सेप्टेंस. हाउ एवर जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को देखते हैं तो यहाँ क्या होता है? एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़रूरी होती है, सो दैट बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली बिकम्स वैलिड. इट एक्चुअली फ्रुक्टिफाइज इनटू अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर है वो क्रेडिटर होता है और वो ऑर्डर कर रहा होता है डेटर को. तो डेटर जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है दैट येस यू आर राइट, आई ओ यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, एंड येस यू आर राइट, आई एम गोइंग टू पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ये जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती है तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता है. सो इन बिल ऑफ एक्सचेंज यू नीड टू हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रॉवी. प्रॉमिसरी नोट में आप क्या नहीं कर सकते? ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता. बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं हो सकता है? तब तो कोई भी उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के दे आर गोइंग टू make misuse that, and that is mentioned in section 31 clause 2 of the RBI Act. Bill of exchange में क्या है? It can be a bearer instrument but not on demand. आपका जब मन किया आप डिमांड करके उसे इनकैश नहीं करा सकते. You have to wait till the maturity date, and only when it matures you can encash it. तो ये
एक कंपैरेटिव स्टडी रही प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की. नाउ मूविंग फर्दर वी हैव चेक इन सेक्शन 6. अब चेक को समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, सपोज मिस्टर ए और बी के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुआ और मिस्टर बी जो है वो क्रेडिटर हैं, उन्होंने कुछ कर्ज कुछ लोन मिस्टर ए को दे दिया. सो मिस्टर बी विल रिसीव द मनी, he is the creditor and Mr. A is supposed to pay back the money because he is the debtor. अब क्या होता है, मिस्टर ए के पास पैसे आ जाते हैं और वो एक चेक बनाते हैं. सपोज ZZZ कोई बैंक है, उसके नाम से वो मतलब उस बैंक का वो चेक उठाते हैं और वो चेक बनाते हैं और मिस्टर बी को दे देते हैं और कहते हैं यू कैन इन कैश यू कैन गेट योर मनी बाय दिस चेक. तो अब ये चेक कौन बना रहा है, हु इज formulating this check? It is Mr. A. He is drawing the check. So Mr. A is the drawer. यह चेक उठा के किसे दे रहे हैं, मिस्टर बी को. ये मनी फाइनली किसके पॉकेट में जाएगा, मिस्टर बी के पॉकेट में जाएगा. सो मिस्टर बी विल रिसीव द मनी व्हेन ही विल डिमांड दिस फ्रॉम द बैंक. क्योंकि ये चेक किस बैंक का है, ये ZZZ बैंक का है. तो मिस्टर बी को अगर ये चेक मिल भी जाता है और वो बैंक नहीं जाते हैं, सो द बैंक इज नॉट गोइंग टू कम होम एंड गिव इट टू मिस्टर बी. ये मिस्टर बी को बैंक में जाके डिमांड करना होगा. सो ही इज गोइंग टू डिमांड दिस फ्रॉम द बैंक बाय प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक. तो यहाँ पर मिस्टर बी जो है वो पेई हैं. अल्टीमेटली ही इज द वन हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी इनटू हिज पॉकेट. बैंक क्या है, सी बैंक इज पेइंग द मनी टू मिस्टर बी. When Mr. B is going to the bank and presenting the check, the bank is ready to pay this money to Mr. B. तो बैंक यहाँ पर ड्रॉवी है. This is very important to understand. Mr. A जो इस चेक को बना रहे हैं, he is the drawer of the check. He is drawing the check on the bank. That bank, whenever Mr. B comes to you, you have to pay it. तो Mr. A via this check ऑफ ZZZ बैंक, ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई व्यक्ति इस चेक को लेकर आएगा मेरे नाम से, आप इसे पैसे दे देंगे. सो बैंक इज द ड्रॉवी एंड हु इज अल्टीमेटली गोइंग टू रिसीव द मनी, इट इज मिस्टर बी. उन्हीं का पैसा, ही इज द क्रेडिटर, सो इज गोइंग टू रिसीव द मनी. सो ही इज द पे. So here I have tried to consolidate the entire concept of the three negotiable instruments into a chart. You can make use of this chart to revise your concepts. You can take a screenshot and whenever you have time you can glance through it so that it will keep refreshing your memory. So here if you see the promissory note, the maker of the instrument is called the maker only and the pay is the one who is going to receive the money, and maker himself is going to give the money. Whereas in bill of exchange, the drawer he makes an order asking for his money, asking for his payment. So who is going to be the receiver of the money? This drawer himself can be the receiver of the money, or he can order that you pay the money to some third person, or if he has discounted the check, as I have discounted the bill of exchange as I have discussed earlier, in that situation this money will go to the bank. The bank will be receiving the money. And who is the money giver? It is the drawee upon whom this order has been made, this bill of exchange. This bill of exchange is going to make an order upon the drawee to pay the required amount of money. If we see the check here also, the person making the check is called the drawer. So drawer is the one who is the maker of the instrument and he is the debtor also. Who is going to receive the money? That person will be the payee. So creditor is now going to receive his money, so he is the payee. Money giver. In case of a check, the entity which is going to give the money will always be a bank. So the drawer will always draw a check upon the bank in order to pay the payee. So here I have tried to consolidate things, and if you like this video, and you can share it with your friends, and do subscribe to my channel because this acts as a motivation for me to come up with more such videos for you. And as far as negotiable instruments is concerned,
It is not possible to cover the entire BAR Act in one video. It's going to be a really long video then. So I'll try to come up with another part of the video wherein I'll be discussing the other sections of the Negotiable Instruments Act. Till then, you have to keep revising. You can make the best use of this video by firstly understanding the concept and then going through the BAR Act so that you touch upon all the provisions given in the BAR Act. And please be consistent with your studies. See, there are a lot of subjects which you have to cover. So what I can suggest is, when you are done with one subject and you feel a little bored or you feel a little saturated, आप उस समय दूसरे किसी सब्जेक्ट को उठाएं and try to maintain your consistency anyhow. And as far as mastering the BAR Acts is concerned, that can be done only by revising it multiple times. I have said this to you earlier also, that you need to be very familiar with the keywords of the BAR Act. So keep doing that, be consistent, and if you like this video, please share it with your friends and subscribe to my channel. And if you have any queries regarding this video, please put it in the comment section below, and I'll be more than happy to answer all your queries. And soon I will be coming up with the second part of this video. Thank you so much for listening.